we see understanding or whatever practice area we call it, right? How it happens, how it starts right from the time of incorporation. Let's start with a discussion. Okay, just before we kick off, who all have practice or who all have interned in this practice area? You have worked in M&A side, right, Tamanna? Private equity VC is not M&A. Have you worked in private equity space also? Sir, just a due diligence in that. Okay, due diligence. Anyone else? No one, right? But have you heard about it? There's a practice area called private equity venture capital practice area. सबको मतलब किसी के लिए एकदम अननोन स्पेस है क्या किसी के लिए भी? जस्ट रेज हैंड। आदित्य, आपके लिए तो होगी कि आपने सुना हुआ है। आपने भी सुना हुआ है, वेरी गुड, तो अच्छी बात है। ओके, see guys, we started with company law for basic reason that we should understand the functioning of a company. We should understand how does it uh, what are the norms, what are the requirements in relation to the governance of a company, in relation to the compliances, and any commercial transaction or anything related to corporate transaction we're talking about, there is a company involved, right? And that's why understanding of company law is is a must, and that's what we started with. Now, obviously, any company, when we say incorporation of a company, and that is what the birth of a transaction, you can say the birth of not a transaction but birth of a baby, you can say, and how baby evolves. That's how we will try and understand how we move to PEVC, how we move to capital markets, how we move to M&A, right? So think of that in your head कि एक कंपनी का बर्थ हो रहा है, कंपनी का इंकॉर्पोरेशन हो रहा है, उसके क्या गवर्नेंस है, उसके क्या कंप्लायंसेस हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट, अंडर कंपनीज एक्ट, एंड जनरली how it evolves over time. कोई भी कंपनी इंकॉर्पोरेट होती है, there is definitely an objective company has. Company is not getting incorporated just कि हाँ ऐसे ही कर लेते हैं incorporate, right? There is a purpose, there is objective, there is a set of like there's some business a company wants to do, and that is what the understanding about any startup we can say have, right? I'm not talking about non-profitable companies. I'm not talking about shell companies. प्लीज बी माइंडफुल। आप ये मत बोलना सर आप तो बोल रहे हो सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है, शेल कंपनीज भी तो होती हैं। हाँ होती हैं शेल कंपनीज, राइट, बट शेल कंपनीज का इज नॉट अ स्टार्टअप। शेल कंपनी इज नॉट समथिंग, उसको फंड्स चाहिए, इसको पैसा चाहिए, ठीक है? So when we are talking about, we're talking about a company who has a definite objective which is also incorporated in their articles, which we have all discussed in detail what it means, right? So any company with an objective of generating revenues and doing a business would need funds, would need capital, right? Without capital, it's it's impossible to do a business. पैसा चाहिए होता है ना, खुद का पैसा लगता है। तो let's start with very basic sort of example. Let's say a company called XYZ Limited, okay, who has business of providing software solutions. प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन मतलब कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, वो एप्लीकेशन बनाएंगे विच विल हेल्प पीपल कनेक्ट, विच विल हेल्प बिजनेस कनेक्ट, राइट? लेट्स एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको सो दैट यू हैव अ बेस एग्जांपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ इट विल इवॉल्व। नॉट टू डू दैट, ओके, it will start with what? It will start with an idea, right? Let's say Avi Kapoor is the founder of that company XYZ Limited. Okay, Avi must be having some idea कि let's एक ये चीज हमको लग रही है मार्केट में एक गैप है, ये गैप को हम फिल कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है? बट आइडिया के पैसे नहीं लगते हैं, आइडिया तो आ जाते हैं, बट आइडिया को कन्वर्ट करने में, कॉन्सेप्चुलाइज करने में, एंड दैट कॉन्सेप्चुलाइजेशन प्रोसेस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी स्टार्टअप, right? To take it to next level. Next level is not generating revenues. Next level is to maybe make a prototype of it, maybe make a draft of that application, maybe make a sort of a sketch of that application, right? Okay, and maybe test it in the market to see whether it is a product market fit. That is what a terminology what investors use, कि आपका product is a market fit or not, it's something which will be acceptable in the market or not, they will be consumers or not. Those testings are done, and testings कैसे होती हैं?
अभी का फ्रेंड है ऋषि, प्रतीक, नेहा, दीपक। अभी बोलेगा भाई ये मेरा एप्लीकेशन मैं सोच रहा हूँ और मैंने इसका ये प्रोटोटाइप बनाया है, तू बता तेरे काम आएगा कि नहीं आएगा। दैट इज अ जनरल सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट। वो चीज करने में भी क्या क्या चीजें कर रहा है अभी। पहले अभी ने क्या किया, अभी ने कंपनी बनाई XYZ लिमिटेड, ठीक है। ठीक, उसने फिर एक ये आइडिया बनाया, आइडिया आइडिया आया और आइडिया को उसने एक प्रोटोटाइप बनाया, ठीक है। एक शायद ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ चीज बनाई, ठीक। बट वो सब क्या, लेट्स से अभी कपूर इज अ लॉयर, ओके। इसके आइडिया तो किसी के भी आ सकता है, ही डजंट हैव द टेक एक्सपर्टीज, उसने खुद नहीं बनाया। उसने रायन एंड सौम्या, दे आर टू टेक गाइज, उन्हें उसने उनको हायर किया, राइट। या तो उनको हायर भी नहीं किया, लेट्स से देयर इज सम अदर आउटसाइड वेंडर हु इज इन्वॉल्वड इन प्रोवाइडिंग टेक सर्विसेज, ओके। अभी ने उनको हायर किया, बोला कि भाई आप लोग सस्ते में करके दे दोगे, आप मेरे को प्रोटोटाइप बना के दे दो, ठीक है। ये सारी चीजें करने के लिए इवन बेसिक बेसिक चीजें हैं एकदम स्टार्ट की, पैसा तो खर्च होगा। क्यों, कहाँ का खर्च होगा, कंपनी इंकॉर्पोरेट की तो इंकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, राइट। वो जो प्रोटोटाइप बनाना है, या तो अपने इन हाउस लोगों को हायर किया, उनका एक्सपेंसेस, राइट। या किसी वेंडर को, आउटसाइड वेंडर को पॉइंट किया, उसका एक्सपेंसेस, खर्चा तो है ना। या फिर और कहो दो तीन लोगों को और हायर किया, जस्ट टू फॉर मार्केटिंग, जस्ट टू फिगर आउट टेस्ट इन मार्केट, कि भाई आप मार्केट में पता करके और किसका क्या है, किसी को कहीं भेज रहा है, किसी को कहीं भेज रहा है, उनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं ना, ये स्वीट एक्सपेंसेस होते हैं। ये एक्सपेंसेस वो होते हैं जिसमें अभी बोलेगा भाई मेरे जेब में 10 लाख रुपए है, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि आइडिया भी वही कॉन्सेप्चुलाइज करने की कोशिश करता है जिसको मालूम है कि जेब में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपए तो है, इतना खर्चा मैं अपनी जेब से लगा सकता हूँ। उसको कहते हैं फाउंडर्स मनी। दैट इज द सॉर्ट ऑफ कैपिटल व्हेन यू लुक, व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल कहाँ से आएगा। अवी एज अ फाउंडर, अवी एज अ प्रोमोटर ऑफ अ कंपनी may be putting that money from his own pocket, okay. Maybe let's say he has a relative Keshav Srivastava, okay, who's super rich. केशव बोलेगा हाँ आई विल हेल्प यू ब्रो, ओके, तू मेरे से भी पैसा ले ले, ठीक है। आदित्य भी बोलेगा हाँ, अभी अभी भैया आपको पैसा मैं दे दूंगा, मेरे पास भी है थोड़ा पैसा। तो उसको फ्रेंड्स एंड फैमिली का पैसा बोलते हैं, राइट। ऑल दिस इज प्री सीड मनी, आई कैन से। प्री सीड इज इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाई इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज पे जब जाएंगे तब सीड मनी की बात करते हैं। और सीड क्या होता है, सीड क्या होता है, सीड क्या होता है नॉर्मल टर्म्स में, कि कोई भी आप प्लांट में सीड डालते हो तो प्लांट ग्रो करता है, राइट। सीड इज द फर्स्ट थिंग। स्टार्टअप की ग्रोथ वैसी ही है, ऑल द टर्म्स अराउंड इट आर वेरी रिलेटेबल, राइट। सीड इज समवन हु इज गिविंग यू दैट मच oxygen in life as a startup that you can actually vision yourself to move to the next stage in life, okay. So whatever we discussed is not seed money, is something your own money जो हम लगा सकते हैं, we know we can do it, and it's called free seed, where founder money, friends, family and all happens, right. But इसमें ना, अब तू ये बता, तुम लोग ये बताओ, जब हम प्रोमोटर फंडिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं, हम लोग कॉन्सेप्चुलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ के एक्सपेंसेस समझ लिए, या सोर्स ऑफ फंडिंग समझ लिए। डू यू रियली थिंक Aditya as a relative or Keshav as a relative of Avi, right, who is putting in money, will enter into any agreement with Avi कि भाई मैं पैसा लगा रहा हूँ, लेट्स साइन एन एग्रीमेंट कि मेरे को इतना रिटर्न मिलना चाहिए, ऐसा करेंगे? नहीं होता है। With friends and family there are no agreements, it's more of faith, it's more of trust, it's more of providing that helping hand, okay, that we are with you brother, okay. If you think your idea will work, well and good. Obviously if you will make money we will also make money, that's the basic understanding. It is not that they're going to say कि we want an exit like this, we want a return like this. Normally people don't do that with friends and family money. If it is coming at a very pre-seed level, very conceptualization level, it's more on trust and faith. So it is something sort of understood, right? When Byju started like that. When Zomato started, when Paytm started, Paytm for instance, right? Paytm is a very good example because Paytm, one of the investors is investors in Man and a startup, okay? And I know their startup journey. I know from beginning. It was all friends and family who had put in money. No agreement, nothing. Okay. Yes, certain times you do have agreements at the stage, at the initial stage also, where let's say Avi Kapoor is one of the founder
and Rishikesh is one of the is also co-founder. Okay, but Rishikesh is one of the inactive co-founders. Why he's a founder? Because maybe it was his idea, but Avi had more acumen to conceptualize it to the next level. So he says, कि Avi बोलता है ऋषिकेश को, listen, good idea, bro. I will take it forward. Okay, you take a backseat. We are 50-50. Now Rishikesh may be okay. If Avi takes it forward, then Avi is the main guy. Avi is everything. I may be on the back foot, and I may be thrown out of the company later stage. So there may be a founders agreement. Okay, maybe if their terms are not, if you don't have that trust and faith, maybe. बट नॉर्मली नहीं होते हैं. तो उस लेवल आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए. कॉन्सेप्चुलाइजेशन के बाद क्या होता है? व्हाट इज द सेकंड स्टेज? जनरली थिंक, आप लोग भी सोचो कि आप एज अ फाउंडर आप एक आइडिया को प्रोटोटाइप बना रहे हो, मार्केट में मार्केट प्रोडक्ट मार्केट फिट देखते हो. चलो दो लोगों ने बोल दिया अभी को कि हाँ यार आपका आइडिया सही है और मेरे को यूज भी आ रहा है, तो अब क्या? व्हाट विल द नेक्स्ट स्टेप? अभी क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में आप? Sir, I would want to, like, for example, if it's a software, I would want to bring it out in the market, not just as a test product, but like an actual product that people can buy and use. So for that, I think I would first want to get funding so that I can uh, get into the process of making those softwares and getting it available for the market. Very good. And that is called growth and development phase. Okay, exactly what Avi pointed out. To test it in the market, to see the viability of the product in the actual market now, right? And for that, it will not happen with the prototype anymore. Prototype is a very first बेसिक ड्राफ्ट होता है ना, जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करते हैं तो पहले हम लोग ड्राफ्ट भेजते हैं, फिर बोलते हैं आप लोग कमेंट कर लीजिए, आप लोग ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, उसके बाद फाइनल वर्जन आता है ना, राइट? तो प्रोटोटाइप इज द फर्स्ट ड्राफ्ट. फाइनल वर्जन इज लाइक द, नॉट फाइनल वर्जन, नियर फाइनल वर्जन इज लाइक अ product or application you will go out and in the market, right? That is a growth and development phase. Now for that, do you think with the basic vendor support or with the basic in-house support, would it be possible for Avi to take it to that growth and development phase? That would be sort of hitting yourself bad. Because if you go out with a bad product, if you go out with a sort of very basic product in the market तो सिर्फ उसका लुक एंड फील देख के ही बोल देगा ना. आपको चाहिए वो दिमाग में कि आई शुड गो आउट एंड गिव माय बेस्ट, राइट? एनी फाउंडर, एनी पर्सन हु इज दे थिंक ऑफ डूइंग, दे गिविंग देयर बेस्ट, उसके लिए बहुत पैसा लगता है. अब अभी की जेब में पैसा नहीं है, और फ्रेंड एंड फैमिली बोलेंगे भाई हाँ पैसा तो है हमारे पास पर इतना नहीं लगा सकते, अब ये रिस्क बड़ा हो गया. तुम बोल रहा था 5 लाख रुपए दे दे, 2 लाख रुपए दे दे, 10 लाख रुपए दे दे एज अ प्री सीड मनी, वी वर फाइन. अब तू बोल रहा है मेरे को भाई 50 लाख रुपए दे दे, 1 करोड़ रुपए दे दे, दैट इज टू मच. ओके, देयर वेयर सोर्स ऑफ फंडिंग क्या होगा अभी के पास? व्हाट विल द ऑप्शंस? if not founder money, if not friends money, if it is not family money, until unless you're quite a loaded founder, if you are like sort of, I will not call it you are bootstrapped. Bootstrapped is a different term. It's used for different purposes. But I'm saying you are generally rich. Then it's a different thing. Like you are Akash Ambani, तब तुम्हें कोई friend family नहीं, तब तो सभी तुम्हें पैसा लगाना चाहेंगे because you are so big, right? But if you are as basic as person could be, right? You don't have that much. What will be the source of funds now you think should be available to any startup in that scenario? Yes, Soumya. Sir, maybe he can approach the venture capitalist to invest in the initial stage of the startup. Okay. Please note that venture capitalist, I'm not saying it's a right or wrong, but I'm just asking you to take note of it. So I will explain now. Okay. Tamanna? Sir, I was also going to say institutional investors who invest in such startups. Note that, please. Vansh? He will have to reach out to angel investors for the initial phase. Please note that too. Anything else? Pratik, आप बताइए. You are new and fresh to this batch. Sir, I was also thinking the same that any big businessman who have such money to invest in the company, who can invest in the company because he already built such brands,
he can approach such people to get money from them. Right? You are maybe saying high net worth individuals. Yeah, obviously, like the people we HNIs. have seen in Shark Tank and all. these are हाँ वो तो हाँ वही चलो इन्वेस्टर्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स investors, yeah, इन्वेस्टर्स high net worth, शार्क yeah. टैंक भी प्लीज नोट करिए वो भी डिस्कस करेंगे गुड पॉइंट एनीवन एल्स और कोई तरीका पैसे कहाँ से रेज कर सकते हैं सोचो ना यार सोचना खुद को अपने आप को डालो थिंक लाइक स्टार्टअप फाउंडर और सोच कहाँ से यस अभी So maybe a bank loan. नोट दैट प्लीज यस वंश Yes, crowdfunding can ऑल also ऑफ दिस work. So, like, तो if काफी product कुछ is, कर हाँ सॉरी say crowdfunding, sir, if the product is हमारा आवाज released. नहीं आ रहा है वंश Hello, sir. हाँ Hello. हाँ Yeah, हाँ even the crowdfunding and all can also work if the product is so good. So he can reach out to public and then ask Hmm. for funding. ठीक है ये सब नोट कर लिया आप लोगों ने ठीक है लेट्स टेक इट वन बाय वन एंड थिंक अबाउट इट लॉजिकली ओके डोंट दिस लॉ इज ऑल लॉजिकल ओके एंड प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी मच प्रैक्टिकल so it's nothing there's no big thing it's not something which is what people create and people make us think in the market in the law firms कि यार इतना है उतना है अरे यार इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है it's everything logical take it one by one starting with Avi's point okay where we spoke about bank loans think from a startup perspective think from a perspective कि startup है उसको बैंक लोन मिलेगा अंजलि मिलेगा तो क्यों मिलेगा नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा जस्ट सोचो एक बार आप और दूसरी चीज सॉरी ये मैंने टेस्ट के टाइम पे बोला था बिफोर आई एम कटिंग यू ऑफ सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ दूसरी चीज मैंने टेस्ट के टाइम पे हर एक को आपको बोली है एंड इवन फॉर द न्यू बैच न्यू स्टूडेंट्स इन दिस बैच when I say Anjali when I say Avi when I say Pratik when I say Shubh when I say Arjun right what my so grateful students who really like me and I keep asking them like Mr. Shubh Oja is one of my grateful students right I keep asking them कि क्या है और कैसी चीजें हैं जो बच्चों के माइंडसेट में चलती हैं in terms of when I teach when I train because I train and teach like a not like a teacher but like senior from a firm कि अगर मैं अपने एसोसिएट्स को समझाता तो कैसे समझाता राइट और वहां पे तो जनरली डिस्कशन होता है तो व्हेन आई कॉल यू आउट इट्स नॉट कॉलिंग आउट हाउ इट हैपेंस इन कॉलेज प्लीज डोंट कंसिडर आई अंडरस्टैंड आई हैव हर्ड कि जिंदल में होता है calling out as a process and उसमें you guys hate your teachers for that right यहाँ पे I do it only for the reason that you interact with me and we are the group here we are the family here so no one is judging anyone if you don't know it well good to be very honest I'm telling you Aditya Kumar here who started as a first year guy who has joined college after discussing with me right and I asked questions and tests from him I saw that confidence in him which I didn't see in 3 months back तो you each one of you will set an example for others to follow तो मेरे को बाकियों से कंपेयर मत करना टीचर के पर्सपेक्टिव से राइट तो व्हेन आई एम आस्किंग अंजलि टू से डोंट कंसीडर कि सर कॉल आउट कर लेते कभी भी नहीं आता है बट आई एम मेकिंग यू थिंक एज सिंपल एज दैट राइट यस अंजलि सोचिए बैंक लोन मिलना पॉसिबल है स्टार्टअप को So I think bank loan milna would be very difficult because for a startup, for a bank to give a loan to a startup, it's a very high risk investment. Plus, they will ask for something as a charge for in the company. Very good. हाँ, please. हाँ, continue. So for that, a startup doesn't have that. So it would be very hard to get a loan from a bank. Very good. Yeah, you sort of summarize the entire thing. See, banks and financial institution is a very easy option. अगर सबसे पहला दिमाग में इन्वेस्टर्स नहीं आता था आज से 10 साल पहले अगर आप कुछ भी बिजनेस करते थे ना सबसे पहले आता था भाई लोन ले लेते हैं ठीक है क्या चेंज हो गया 10 साल में Yes, Neha, you had to say something? So I had a question. Do banks nowadays have an investment wing
because there are a lot of startups and everybody is realizing this concept. So do banks have a separate wing? We'll come to where- that. We'll come to that. We'll come to that. Okay. Yeah, cut, Sure. cut. Good point. So that also I'll cover now. Okay. देखो आप लोग, दो sort of sources है. Don't go by who is sourcing that. Go by the basic nature of sourcing. दो sources है. एक कहते हैं borrowing, एक कहते हैं investment. ठीक है. Borrowing is loan. Investment is not loan. Investment is sort of a term which you can say where you are sharing that risk along with Avi Kapoor, who is the founder, depending on the size of your investment. And we will come to Neha's question, because Neha's question that, right? So I'm sort of giving you that perspective. When I'm saying bank loan, I'm not saying bank can't do other things. But when you're talking specifically about a loan, right? If you go to, there are a lot of banks provide startup loans. There is, if you see loan apps, there are a lot of loan apps, fraud apps also. There are a lot of those fraudulent apps also working right now. But they have this particular model of providing loans to MSMEs, right? Discounted price and stuff and all that. But again, all of it comes down to two things. Think from a startup perspective at a very basic level. As a startup, Avi Kapoor, let's say he goes with that prototype and goes to a bank. Okay, says कि भाई मेरे को लोन चाहिए, मेरा इतना अच्छा आइडिया है, इतना भयंकर आइडिया है ना कि मैं पैसा बनेगा, ठीक है, और आपका भी रिटर्न मिल जाएगा. बैंक बोलेगा अभी तेरे पास गिरवी रखने को क्या है. बहुत बेसिक सी चीज है. गिरवी इज अ टर्म व्हिच यू मस्ट हैव हर्ड इन लॉट ऑफ मूवीज एंड स्टफ. In general understanding, in legal understanding, we call it a security. We call it a security package. What security package you have? Okay, don't confuse yourself this security word with the securities word which we have understood in company law, please. Okay, वो सिक्योरिटीज होती हैं, इक्विटी, डेट, फलान ढिकान, अंडर SCRA, वो जो हमने डिस्कस किया, वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे लाइफ में. उससे मत, ये सिक्योरिटी होता है कि आपको गिरवी रखने को क्या है. आपके पास घर है क्या, आपके पास गाड़ी है क्या, आपके पास ज्वेलरी है क्या, राइट? क्या क्या चीजें हैं आपके पास रखने को. तो जो फाउंडर स्टार्ट, अब अभी ये क्या घर गाड़ी क्या हो गया, पर्सनल हो गया, पर्सनल एसेट्स हो गए. नॉर्मली व्हेन अ कंपनी इज गोइंग फॉर अ सिक्योरिटी, कंपनी का क्या है, कंपनी के एसेट्स क्या है. ओके, to put that, to keep that as a security package. Why you need a security package? If a bank is giving 1 CR loan, right, they would definitely look for security worth at least 1.5 CR or at least 2 CR. And very basic level of understanding, you guys I'm sure must have seen this, ki home loan lene jate ho jab aap, right? तो property documents, जो घर के कागज होते हैं, it's kept with bank. The title deeds are with bank till the time your loan is complete. It's your home. It's something which you are using. You are enjoying the premises. Everything is fine. You're paying your due EMIs. That's what the function of loan is. That if you go and take a loan from a bank, there is a scheduled payment plan which you have with any bank. Either you pay monthly EMIs, either you pay 6 monthly EMIs, either you pay quarterly EMIs, either you pay yearly EMIs. EMIs क्या होते हैं? EMIs तो चलो is more of monthly term, but it's a fixed repayment thing कि जब principal amount भी थोड़ा दे रहे हो, उसका interest भी दे रहे हो, right? बैंक को तो इतना ही चाहिए होता है. बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस आज 10 रुपए पे है और कल 10 करोड़ पे है. उससे कोई फर्क नहीं है. बैंक को है कि आपके पास एसेट क्या है. अब आप सोचो ना, 10 साल में कहानी क्या चेंज हुई है. पहले आप बैंक के पास जाते थे, और बैंक के पास जाना इतना पॉसिबल नहीं, और बैंक भी इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं टू एनी स्टार्टअप, क्योंकि बिजनेसेस इन इंडिया स्पेशली इन द लास्ट डेकेड, टिल द लास्ट डेकेड, यूज्ड टू बी मोर ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस. ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब कि एक्चुअल बिजनेस है, कि हाँ मेरे को फैक्ट्री सेटअप करनी है, मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं विच इज अ टेंजिबल प्रोडक्ट जो बिकेगा, राइट? अब फैक्ट्री सेटअप करनी तो लैंड है, फैक्ट्री है, मशीनरी है, बहुत सारे एसेट्स हैं, ठीक है? तो बैंक लोन दे रहा है, तो ऑल ऑफ दोज आर मॉर्टगेज्ड, एंड दिस इज समथिंग यू मस्ट हैव learned as a concept in your college. Even if not, it's not a very difficult concept. Mortgage is something for all immovable assets we talk about.
right? Hypothecation is all about, I'm sure you guys know it, right? All of this concept. Hypothecation is all about movable assets, right? Pledge is another concept. ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में भी, अभी कोई लोड नहीं है. तो ये सारी चीजें मॉर्गेज हो जाती थी. ट्रेडिशनल बिजनेस था, लोन मिल जाता था. एक सेकंड है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड. Sorry guys, this sort of call. Yeah. So it was a very logical thing to get loan at that time or time. अब 10 साल में क्या हुआ? 10 साल में यार we know now कि around 1 lakh, मतलब 85,000 last year तक, I'm sure उससे बढ़ ही गए होंगे. More than 1 lakh startups have come into picture, and then I'm talking about startups which are registered with the department. Okay, there are many other startups who are not registered also as MSME or with the government. Most of these startups are not providing tangible product to begin with. They are not a manufacturing company. They have not set up factory as such. They are more on the premise of maybe building an application, maybe doing something which is okay, even providing tangible asset also, right? But a very small size, small scale. Okay, शायद उसमें लोन मिल भी जाए, but again issue क्या आ जाता है from a bank's perspective? If you're a bank person, would you really provide a loan when you know that there are 10 other startups? Because out of a lakh, how many you know are unicorns? How many you know have succeeded? 99% of them have failed. Okay, they have gone down south, faced losses, shut, right? From a bank perspective, you see it as a big risk. क्योंकि बैंक इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, बैंक लोन दे रहा है. उसको कॉन्स्टेंटली अपना पैसा विद इंटरेस्ट चाहिए, उसको सिर्फ अपने इंटरेस्ट में ही इंटरेस्ट है और कुछ नहीं चाहिए बैंक को, राइट? So it's a very challenging thing for bank to provide loan for a startup multiple counts. कि रेवेन्यू एक तो जनरेट नहीं करता है कोई स्टार्टअप इन द बिगनिंग. हम लोग प्रोटोटाइप की बात कर रहे थे, हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट फेज में जा रहे हैं. आर वी जनरेटिंग रेवेन्यूज? तो एज अ फाउंडर फॉर अवी, ही ऑल्सो नोज कि भाई आई विल नॉट बी एबल टू सर्विस माई लोन्स, आई विल नॉट बी एबल टू पे देम बैक, आई विल बी डिफॉल्टर राइट ऑन डे वन. एंड एज अ डिफॉल्टर, खुद ही फाउंडर डिफॉल्टर बन गया, कंपनी डिफॉल्टर बन गई, तो फिर कंपनी धंधा क्या करेगी आगे जाके? धंधा छोड़ो, कोई और पैसा लगाएगा ही नहीं कंपनी में. वो बोलेगा आप लोग ये डिफॉल्ट करके चल रहे हो, व्हाई वुड एनी अदर पर्सन? इट्स मतलब यू हैव टेकन अ वेरी रॉन्ग पाथ. So loan becomes a very sort of, even though these loan apps claim to provide loans, even if there are many models, financial models which have come in to help companies, right? Still it's a risk in the founder's head. What if I am not able to generate revenues? Right? Because revenue generation is a big bet you're taking. You in your head think कि maybe 2 महीने में मेरा revenue generate होगा, but actual में क्या होता है, 2 साल लग जाते हैं कि आपके revenues नहीं होते हैं, right? And it's when you talk about growth and development phase, now coming back to growth and development phase, right? Just taking the topic a little back. When you talk about growth and development phase, you are moving from a prototype to a near final version of the application, as I said, right? You have more hiring, you have more people running in the company. You maybe have increased your team size from 2 to 20. You need a lot of funds, right? And for that, if you have approached a bank and you don't have any asset, your only asset is an intangible asset, which is a software. And if let's see your company is only going down south, if your company only has got into a problem as a defaulter, जो application है उसकी क्या value है? Zero. तो from bank perspective आपका asset भी नहीं है, as a founder आप loan service करने की capability भी नहीं रखते हो, तो though it is an option, though definitely loans are always an option, but there are a lot of angles to it because of which it becomes a not so viable option.
अब हम सोचते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में। कई लोगों ने बोला यहाँ वेंचर कैपिटल, एंजल फंड्स, राइट, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, शार्क टैंक। शार्क टैंक पे आते हैं। शार्क टैंक इन्वेस्टर्स की लाइफ दुनिया में वही मायने रखता है जो लॉयर्स की लाइफ में सूट्स रखता है, राइट। सूट्स देख के कई लोग खुश हो जाते हैं कि ऐसी लॉयर्स की लाइफ है एंड वी वांट टू डू लॉ व्हिच इज आई सॉर्ट ऑफ आई डोंट नो, a suit should be filed against them because all, though it gives a perspective of how investments can happen, though it gives a perspective of a lot of financial terms when we talk about Shark Tank, but it is all drama. Please understand. That is only for entertainment purposes. If you look at that, is only from perspective of understanding how people have been how generally people are opening up, thinking, having ideas, sometimes great ideas, sometimes not so great still, and all that is because Ashwini Grover killed it, right? Nothing else. Don't use it for your learning purpose, please. Okay. शार्क टैंक इन्वेस्टमेंट्स ना सिर्फ और सिर्फ जो लोग वहां पे आते हैं, किस पर्पस के लिए आते हैं, कोई बता के दिखाए मेरे को, किस पर्पस के लिए आते हैं। जितने भी लोग आते हैं शार्क टैंक पे, जो पिच करने आते हैं, ये सोचा सर मार्केटिंग के लिए। बस, एज सिंपल एज दैट। उनको अपना प्रोडक्ट वहां पिच किया, भले इन्वेस्टमेंट मिले या ना मिले, मार्केट तो हो गया भाई, और कोई नहीं, राइट। तो मार्केटिंग के लिए भी कौन आएगा? मार्केटिंग के लिए भी किस टाइप के लोग आएंगे? मार्केटिंग भी किसको करनी होगी? मार्केटिंग भी वही टाइप के लोग करेंगे जैसे जैसे किसका फूड जॉइंट्स है, राइट। तो इससे क्या होगा, बॉम्बे में फूड जॉइंट है वैसे ही में, या कहीं पे कहीं तो आया था नवी मुंबई में, समथिंग ही सेड, राइट, ही बिकेम फेमस, उसकी सेल्स बढ़ गई वहां पे इस एरिया में कि ये शार्क टैंक पे आया था। तो प्लीज यार, शार्क टैंक वार्क टैंक आप लोग देखो, बट वो आप बस देखने के लिए देखो, और कोई सीखने के लिए तो मैं सिखाऊंगा ना। तो कमिंग बैक, तो दैट इज वन। बट हाँ, जो लोग बैठे होते हैं ना उस सीट पे, उन लोगों ने, वो एक टाइम पे अभी कपूर थे जो आइडिया लेके चले थे, और आज के डेट पे वो बहुत बड़े लोग हैं, एंड दे हैव गॉन थ्रू दैट जर्नी ऑफ अ स्टार्टअप, ऑफ मेकिंग इट बिग, राइट। वेदर इट्स अनुपम, वेदर इट्स जस्ट अ सेकंड, just a second, just a second, just a second. Sorry guys, there's something going on very pressing at my office also, so I have to keep breaking off. Anyways, coming back, we discussed about that. Let's come to the main thing. Their type of source of funding is left with the type of investors we have in market, and type of investors ultimately सबका basic common feature है investment. Okay, something Neha pointed out, for instance, कि banks भी देते हैं, but banks भी वो जो देते हैं ना, वो investment ही है. It's in the different goods they are giving that money, right? Not as a loan, but as a investment. Right? They have a wing, they have an arm, and wing के arm क्या है? जैसे हमारे इंडिया बुल्स फॉर इंस्टेंस, बैंक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, राइट, है ना। हमारी सब्सिडरी है AIF, एक है हमारी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, जो वो इन्वेस्ट करती है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में, राइट। वो हमारी सब्सिडरी है, हमारी होली ओन्ड सब्सिडरी है। वो जो इन्वेस्ट करती है वो इन्वेस्टमेंट है, दो बैंकिंग आर्म है, ठीक है, बट लोन नहीं दे रही है ना। लोन तो हमारा जो लोन देते हैं, और हम लोग बैंक्स में भी ना, देयर इज रेगुलेटरली यू आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट एक्सपोजर। कैपिटल मार्केट एक्सपोजर मतलब कि इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो अप टू 20% ऑफ योर नेटवर्थ, समथिंग लाइक दैट। ओके, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अलाउड थिंग, बट वो अगेन बकेट है इन्वेस्टमेंट का, लोन का नहीं है। तो व्हेन आई से बैंक्स नहीं पैसा देते हैं, आई एम सेइंग ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, नहीं पहली बात तो दे ही देते हैं ऐसा नहीं है, देते हैं। हाउ डजंट बिकम वायबल? बिकॉज वो लोन जो होता है, लोन का प्रॉब्लम ये है कि लोन में आपको गारंटीड पैसा वापस करना है, जो फाउंडर के लिए प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है, इसलिए वो वायबल नहीं है। हम लोग इन्वेस्टमेंट बिकम्स अ वायबल थिंग। इन्वेस्टमेंट कैसे बिकम वायबल थिंग? लेट्स से Avi discusses his idea with me. Sir, I'm coming up with that idea, and this is something which I'm thinking of doing in future as a startup, right?
And I really find that idea to be like which will do well in life. Maybe let's say I have that belief कि हाँ, this idea would work. As an investor, I'm saying, I'll say, okay, Avi, I will provide you something. I'll provide some sort of funding to you. Okay. उसके पहले अभी may have discussed with 10 people, may have gone to his friends and family again, भाई पैसा दे दे, थोड़ा दे दे, हेल्प कर दे, ये वो कर दे, शायद बैंक से लोन भी लिया होगा, फैसिलिटीज भी अवेलेबल करने की कोशिश की होगी, नहीं मिल रहा था, ठीक है, सब दुनिया भर घूम के आ गया, मैं बोलता हूँ मैं कर दूंगा, मैं क्या हूं अभी के लिए? अभी क्या बोलेगा? सर आप भगवान है हमारे लिए, यही तो बोलेगा ना, आपने हेल्प कर दी. दैट्स वेयर दैट टर्म कम्स फ्रॉम, विच इज कॉल्ड एंजल फंड्स, एंजल इन्वेस्टर्स. व्हाई? You understand that, right? Angel investors are that those sort of investors who don't have, first of all, a bucket to provide big funding. Okay, but who can definitely provide that much funding which will help you in that growth and development phase, where you want to take that prototype to a next stage of an application, where you want to do your limited marketing so that you start hitting that revenue cycles छोटा छोटा. Okay, अभी तुम्हारा स्टार्टअप का आइडिया ऐसा है कि या तो तुम पूरे इंडिया में मार्केट करो तभी चलेगा, या फिर बिल्कुल ही ना करो, तो फिर अलग चीज है. बट कोई भी स्टार्टअप आइडिया मैंने तो नहीं देखा ऐसा हो सकता है. स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे ग्रोथ होती है यार, राइट? तो जो एंजल फंड्स हैं, अब एंजल फंड्स क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जितने भी हम इन्वेस्टर्स की बात करेंगे, अब जो भी इन्वेस्टर की बात करते हैं, हम यहाँ पे प्रतीक वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो अनुपम की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो अमन की बात नहीं कर रहे हैं, वो अश्विनी की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? कि जो खुद पैसा लगा दी थोड़ा बहुत अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी. I'm sure they must be also having some company to invest. They may not be putting like their own capacity. Even if they're putting, वो कुछ होते हैं जिनके who have big pockets and who really like idea. Like let's say for example I gave to Avi कि मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लगा दिया थोड़ा फंड, 2 करोड़ रुपए लगा दिया, राइट? नॉर्मली तो फंड्स लगाते हैं पैसा. ओके, फंड्स क्या होते हैं? फंड क्या होता है? क्विकली क्विकली गाइस, क्या होता है फंड? काफी लोग के हाथ उठने चाहिए. सुना नहीं आप लोगों ने फंड? इतना तो ऐड आता है, सचिन तेंदुलकर भी ऐड करता रहता है बेचारा, 500 रुपए लगा दो, 50 रुपए लगा दो. म्यूचुअल फंड सुना है ना आप लोगों ने? कोई और फंड नहीं, म्यूचुअल फंड तो सुना ही होगा. इतने एड्स आते हैं. किया भी होगा आप लोगों ने, या आपके पेरेंट्स में क्या इन्वेस्टमेंट होगा म्यूचुअल फंड में. यस सर, क्या होता है फंड? Sir, in its most basic sense, funds are basically an amount of money that are provided for carrying out a particular purpose. Its most basic sense. Yes, Ryan. I was going to say a very similar thing of just money that is saved up for a particular purpose to carry out a particular object, whatever you have planned. Right. That's the fund Now for that project. fund is pool of money, collecting pool of money. Okay, by let's say some entity ABC, जो जिसमें अर्जुन भी पैसा लगा रहा है, जिसमें वो अमन वर्मा भी लगा रहा है, जिसमें अनुपम मित्तल भी लगा रहा है, जिसमें ऋषिकेश भी लगा रहा है, वो अपने अपने साइज के थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट एक फंड में कर दिए. वो फंड क्या करेगा? वो ऐसा पूरा कलेक्ट पूल बनाता है, पूल ऑफ मनी बनाता है, और फिर वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, वाइबल प्रोजेक्ट्स में, जो रिटर्न्स देंगे वो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? नॉर्मली फंक्शनिंग ऐसे होती है कि यू हैव फंड्स हु आर कलेक्टिंग मनी. म्यूचुअल फंड में तो ये होता है, जब बोलते हैं कि 50 रुपए भी लगा दो चलेगा, 500 भी लगा दो चलेगा, 5 लाख भी लगा दो चलेगा, राइट? कोई भी कितना भी लगा सकता है, आपको रिटर्न मिलेगा, आपको एक देयर इज अ यील्ड which you will get over time, period of time. Okay, as an investor you will get that. It's not you as Rishikesh who is approaching Avi Kapoor, or who may not be aware of Avi Kapoor in life and investing in his project. Rishikesh knows one particular fund run by a fund manager who will manage that fund, who will manage the money collected in that account, in that fund.
okay, and invest in various projects. Rishikesh knows that, वो उसको दे रहा है. He may be investing in Navi Kapoor's project. Okay, तो जब हम लोग इन सब की बात करेंगे, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, तो हम लोग फंड्स की बात करेंगे. तो एंजल फंड्स, राइट, वेंचर कैपिटल फंड, राइट, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स. अगेन, क्या एग्जांपल्स हैं? एंजल फंड्स तो सारे, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे मार्केट में. वेंचर कैपिटल किस टाइप के इन्वेस्टर्स हुए? जैसे सेक्वा कैपिटल. Seco Capital, I don't know how many of you have heard. It's a very big fund in the market right now. If you see any of the startups running, whomsoever has done business, whether it's Unacademy, Byju's, and they have funds all across, irrespective of the competition they may be having as a companies, they don't really care. You have to tell me why they don't care. You have to think about it. Why they don't care? If they are putting money in Byju's, they are also putting in Upgrade, they are also putting in Unacademy. तीनों competing business हैं, still they are putting in funds. क्योंकि ये फाइनेंशियल इन्वेस्टर है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपस में बिजनेस इन लोगों के कंपटीशन में कितना हो रहा है. इनको मालूम है कि ये बिजनेस मेरे को रिटर्न देगा, राइट. दे आर नॉट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेल, राइट, योर negotiation, you're thinking like a lawyer, you're thinking hat, okay, becomes more open, becomes more connectable with the idea what investor, maybe your client may be having. In Sequoia Capital, maybe you maybe end up doing work for them. So if you know what sort of nature or investment they have, accordingly, whatever rights you may ask for them will be very crystallized. ठीक है, बहुत डिफरेंस होता है एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर और एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर में. इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं क्योंकि लेट मी कंप्लीट द फंड, वी विल कम ऑन दैट बाइफर्केशन आल्सो. यस तमन्ना. So sir, can a venture capital like Sequoia be also an angel fund, or am I getting confused? नहीं, बिल्कुल. सेक्वा कैप, ओके, सब वो बताऊंगा, वो हम लोग अभी आता हूँ, नोट कर लो उस चीज को. ओके, लेट मी, सो 3-4 टॉपिक्स डिस्कस करने के. तो लेट मी जस्ट कंप्लीट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट, एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ एंजल फंड इज नथिंग बट पार्ट ऑफ अ वीसी कैटेगरी ओनली. ओके, वीसी कैटेगरी कैसे होती है और एआईएफ रेगुलेशंस हैं जो हमारे सेबी के, उसमें कैसे प्रिस्क्राइब्ड है, जो हमारा पार्ट ऑफ डिस्कशन होगा फ्यूचर सेशंस में, जो मैं आपको आगे लेके जाऊंगा. तो अभी जस्ट कीप योर क्वेश्चन, टेक नोट ऑफ योर क्वेश्चन. हाँ, तो एंजल फंड्स वी डिस्कस्ड हु आर प्रोवाइडिंग, लेट्स से नॉट वेरी ह्यूज पॉकेट, बट हाँ, चल 4-5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, 1-2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया. आई डोंट रिमेंबर द साइज लिमिट दे हैव अंडर द रेगुलेशन, बट हाँ, बेसिक इन्वेस्टमेंट. वेंचर कैपिटलिस्ट funds are more of bigger funding requirements you're looking for. Okay, it is something which where from you have as a founder, Avi has as a founder, now wants to really go out in the market and do big marketing. Maybe he wants to hire Dhoni or Virat Kohli or someone to advertise his product in the market, right? उन्हीं को पैसा देने में शायद एक ऐड का चला जाएगा इसका 4-5 करोड़, right? There he needs that sort of funding, which is maybe 15, 20, 25 CR, 30 CR, 50 CR. Okay. Now you have already as a founder tested your product. You already as a founder got that angel fund. You already as a founder know that there is a product viability. Okay. And accept that sort of product market fit feature you have already cleared, right? Now you know that revenues will be generated. Is now you need to reach out to masses, and that's where revenue generation will start. For that, you need that venture capital funding. Okay. Private equity is the third category of investor. Okay. Angel funds से start किया, VC पे आए, who is taking you to that revenue stage of मतलब actual revenues, जहाँ पे तुम you were talking big revenues talking about, or maybe let's say Byju's का example ले लेते हैं, right? 2011 में सेटअप हुआ, 2015 में शायद उसको इन्वेस्टमेंट आई थी, 2016-17 में सेक्वा ने इन्वेस्ट किया था एज अ वीसी. They moved to that revenue stage. They started doing
एवरीवन स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स, इररिस्पेक्टिव। मेरे को कॉल आ जाते थे यार, मैं कहता था भाई मैं स्कूल छोड़ दिया, हो चुका है मेरा, तब भी मेरे को कॉल आ जाते थे। सेल्स चल रही है, सेल्स कॉल्स आ रहे हैं, सबको आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? सबको पैसे भी देने पड़ते हैं, बहुत हाई लेवल मार्केटिंग, वीसी फंडिंग अलग लेवल पे थी बायजूस के अंदर। वो बायजूस इज अ डिफरेंट स्टोरी फॉर डिफरेंट रीजंस, राइट? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, बट इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अभी तो डूब चुकी है, डूब रही है, नॉट चुकी है। एनीवेज, वो भी एज अ प्योरली फाइनेंशियल इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए थे। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर कैटेगरी में जब हम बात करते हैं, नाउ इट्स अ डिफरेंट थिंकिंग हैट यू नीड टू कीप एज अ लॉयर। Private equity is more like a in market, if you know Carlyle. Okay, Carlyle. Please note these guys. These guys will definitely be your client one point of time in future, whether whichever practice area, whichever law firm you join, whichever law firm में नहीं, because these guys only go to top firms. But हाँ, tier one firms में अगर आप ज्वाइन करोगे, आप लोग को चांस मिलेगा इन लोग के लिए काम। Bearing Asia used to be my client who was a VC investor. Carlyle was my client who was a private equity investor. I worked for them both in private equity side and both in capital market side also. Okay. Anyways, coming back, they have both sort of need. They would come, they can come as a, they will come actually as a financial investor, okay, but have more involvement in the affairs of a company. When you say when you have more involvement in the affairs of company, you have taken a strategic call also. Strategic क्या होता है? कि you are also deciding strategies. You are not just someone की से पैसा दे दिया, जा जो करना है कर और पैसा बना के वापस दे देना बस। नहीं, वो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं प्राइमरली। पैसा लगाया और रिटर्न मिल गया, ठीक है, हैप्पी, टाटा बाय बाय। नहीं, स्ट्रेटेजिक इज समवन हु टेक्स, हु एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है आगे की, हाउ मे बी यू कैन स्केल इट अप इन मच बेटर वे। दे विल नॉट ओनली कम एज ए इन्वेस्टर, दे विल ऑल्सो टेल अभी कि अभी ऐसे करना है, और मे बी इफ दे लाइक योर आइडिया कि इतना अच्छा है, राइट, दे मे जस्ट बाय यू आउट। वो अभी को बोलेंगे भाई तू पैसा दे दे, तू केएम, तू तू अपने शेयर सारे हमको बेच दे, राइट, हम लोग पूरा कंपनी ओन करेंगे, तू एज अ केएमपी रहना। एक सेकेंड यार गाइस, सॉरी 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 सर।
Hey, hi everyone. Please, quickly come back now. Sorry, guys. Something very urgent and can't really avoid. Where were we? Tamanna? Private equity investors and how they come in, but they also हाँ, strategize. strategic. अब ये देख स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर और फाइनेंशियल इन्वेस्टर ना, जितने भी इन्वेस्टर्स कर लो, एंजल इन्वेस्टर भी, राइट, कोई पैसा लगा रहा है कंपनी में, right? They are not providing loan. They are not getting guaranteed interest as such. Okay, they are coming more from the investment perspective. They are sharing that risk with the founder. They will not just put money ki hawa mein de diya. They will do all sort of things. Put yourself in investor shoes and think what all you will do. You will figure out कि कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कंपनी वायबल है, कंपनी अच्छी है, कंपनी में बुराई है, कंपनी का फाउंडर है, कंपनी फाउंडर दारू पीता है, कंपनी फाउंडर सिगरेट पीता है, एक एक चीज देखते हैं वो लोग. मैं बोल रहा हूँ, बट इट्स नॉट अ जोक. There actually have been investors who have been a little reluctant in investing in companies जहाँ पे कंपनी के अंदर, let's say for chill zones, they had promoted a culture of you can have beer in office. Company was like fuck off. Investors were like fuck off. We can't really bet on people. We want people who are really. I'm giving you example. Not every investors are like that. Not everything. I'm saying they're so diligent in terms of investing their money, because आप कैसी हवा में तो नहीं दे दोगे ना यार, when you're putting in crores. Right? That diligent approach brings a lot of work to lawyers, which is called due diligence. Obviously, I'm not saying that you will due diligence in terms of figuring out ki how, what is the character or what is the personality of each and every working there. Sorry, we are talking about legal due diligence. You will check each and everything happening inside the company. You will see whether company has been incorporated properly or not to begin with. As basic as that, you can say. Right? You will see all corporate filings, you will see all past records, you will see litigation involving promoter, you will see licenses, you will see approvals, right? You will see their contracts, business contracts. You will see कि business contracts के अंदर terms कैसे हैं, whether exclusivity है कि नहीं है, right? Whether standard contracts हैं कि whether it changes from person to person, whether these contracts are ऐसे तो नहीं है कि ये dubious contracts हैं which are breaching अपनी RPT requirements, related party transactions which you discussed, sham transactions तो नहीं है, right? ये सब मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी बता रहा हूँ. ये मत सोचना सर इतनी जल्दी जल्दी बता दी है, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है. इन सब चीजों के बारे में ट्रस्ट मी, the way we are going to handle it or do it, chapter by chapter diligence, कि एक एक चीज उसके अंदर क्या क्या देखी जाती है, ये मैं करूंगा आप लोग के साथ. अगर आप इतना भी सीख गए, बाकी सब छोड़ दो लाइफ में, सिर्फ ड्यू डिलिजेंस ही सीख गए ना, आपको उसी के लिए हायर कर लिया जाएगा. ये नहीं मैं बोल रहा कि जॉब मैं लगवा रहा हूं जॉब लग जाएगी, बट वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है लॉ फर्म्स में फ्रॉम एन एसोसिएट टू डू ड्यू डिलिजेंस, जिसको सीखने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं पूरी डिलीजेंस समझने में किसी भी एसोसिएट को, एटलीस्ट अगर वो डेडिकेटेड एसोसिएट है, अगर एक वो कमिटेड एसोसिएट है. Not so dedicated, not so committed. I know people who have worked for 10 years in the industry, they don't know shit yet. They just know one particular section, one particular chapter. They only know real estate, or maybe they only know management. कि इसका डिलीजेंस कर लेंगे इसका. They don't know the entire picture altogether. तो ये सारी चीजें हम लोग टैकल, हम ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ सीखोगे और ये मैं बताऊंगा एक एक चीजें आप लोगों को तो आप लोग कल ही से जाके किल कर दोगे. आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, राइट? आपको भी वो सब चीज चेक करनी पड़ेगी, लाइक वी डिड दैट एक्सरसाइज ऑफ सेक्शन 42 फॉर्म फाइलिंग रिसर्च एंड डिलिजेंस. वी विल ट्राई एंड फिगर आउट कि कैसे वी कैन एक्चुअली फील इट, द डिलिजेंस, राइट? तो दैट डिलिजेंस इज एक्सटेंसिव वर्क गाइस. ओके, वो कौन से स्टेज पे आता है? वो मिडिल स्टेज में आता है एक ट्रांजैक्शन के, ठीक है? इसलिए लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन, because we don't have that much time today. Unfortunately, I lost a lot of time because of this call also I got. But let's quickly move to the mechanics of a transaction. These mechanics, what I'm going to discuss, is something which Janisha, who is my colleague and who is going to teach in private equity space and who has been practicing, who has been doing this day in, day out. She's running a firm. She's a founder of that firm. And their major core practice area is private equity venture capital, right? She is going to take
डिटेल डिस्कशन ऑन इन टर्म्स ऑफ टर्म शीट एंड स्टफ, राइट, एंड उससे भी ज्यादा डिटेल वो आपको समुद्र के बीच के लेवल तक लेके आएगी, मैं आपको नीचे तक लेके जाऊंगा, तो वो बीच लेवल तक तो वो लेके आएगी क्योंकि शी हैज बीन डूइंग इट, राइट, शी हैज मोर एक्सपर्टीज देन इन कंपैरिजन टू व्हाट आई हैव, बट आई हैव मोर पैशन टू टीच यू, टू टेक यू टू दैट लेवल, राइट. सो मैकेनिक्स क्या होंगे? कोई भी इन्वेस्टर, चाहे एंजल या वीसी के अंदर आता है या वीसी इसके अंदर आता है, वो सब हम लोग जब एआईएफ पढ़ेंगे ना तमन्ना, तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. एआईएफ रेगुलेशंस, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स regulations framed by SEBI in 2012. Okay, one piece of regulation which regulates all funds who are investing in India, right, other than mutual funds. Okay, is a parallel discussion which I will take on, which Janisha will not cover because SEBI is my practice area, right? Which I will take you on a parallel basis, and there we will discuss about कि क्या कॉर्पस होता है, कौन किसके अंदर आता है और कौन क्या है और किसका क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर्पस क्या है या रेगुलेशंस का, तो पैरेलल डिस्कशन चलेगा, राइट. मैकेनिक्स वाला जो डिस्कशन मैं आपको पिक्चर फ्रेमवर्क बता रहा हूं, उसके अंदर जनिशा इज गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, मैकेनिक्स क्या होंगे? कोई भी इन्वेस्टर आता है, वीसी, प्राइवेट इक्विटी, वो क्या करते हैं, दे हैव अ रिसर्च टीम, राइट, वो रिसर्च ऑन कि हाँ ये एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या कंपनी अच्छी है, लेट्स इनिशिएट डिस्कशंस. या फिर लेट्स से अभी कपूर ओनली इज पिचिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, जितने भी फंड्स है सबको लिख रहा है, आई हैव सच एप्लीकेशन, आई हैव सच अ ब्यूटीफुल एप्लीकेशन, बहुत ग्रोथ है, बहुत पोटेंशियल है, प्लीज कंसिडर माय एप्लीकेशन, प्लीज कंसिडर माय प्रपोजल, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए. So they will go initiate that discussions, they will may have those initial few discussions. फिर क्या होगा, let's say they find his idea a growth idea, and if they find कि हाँ there's a definitely a worth to have that sort of to consider his project for investment purposes. First thing is term sheet, okay, which is shared by primarily by investors. Okay, until unless where Avi is only proposing कि I will give you all better terms, I will give you this, but वो founders की term sheet सिर्फ एक discussion के लिए ही relevant होती है. Actual term sheet तो investors के से आती है, क्योंकि हमेशा याद रखना कि who is desperate, whether investors or Avi. हाँ, अगर अभी नहीं आकाश अंबानी होता तो फिर टर्म शीट क्या होती, तो इन्वेस्टर गला पकड़ के पैसा डाल देता, राइट. तो उसमें डेस्परेशन या फिर उसका आइडिया मान लो ऐसा है कि ऑलरेडी ग्रो हो चुका है, फॉर इंस्टेंस बायजूस फॉर इंस्टेंस, या अन अकेडमी फॉर इंस्टेंस, लेट्स से नॉट बायजूस, राइट, जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, अब उस लेवल पे पहुंच चुका है, उसको पैसा तो एक कंपनी को अपनी ग्रोथ में, अपनी लाइफ साइकिल में हर स्टेज पे चाहिए ही रहता है. ऐसा कभी नहीं होगा कि शुरुआत में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फेज में इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो बढ़ गई कंपनी और उसके रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, अब वो रेवेन्यूज को ही रीयूटिलाइज करके पैसा लगा रही, नहीं. उसके अंदर कंपनी की एक जो स्टेज होती है, एक साइकिल होती है, उसके हर स्टेज पे सीरीज ऑफ फंडिंग्स होती हैं, जिसको हम सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी फंडिंग बोलते हैं, राइट. कि 2019 में भी हुआ, 2021 में वापस इन्वेस्टमेंट हुआ, 2023 में वापस इन्वेस्टमेंट हुआ. एक ही कंपनी में मल्टीपल ईयर्स, मल्टीपल स्टेजेस में टाइम टू टाइम फंडिंग आती रहती है. तो अगर कंपनी बड़ी बन चुकी है, अब उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए 10 इन्वेस्टर्स हैं, राइट, तो फिर शायद कंपनी इज ऑन द अपर hand, company has an upper hand in comparison to the investors, right. We are talking about at a very basic stage, we are talking about initial stage, जहां पे हमें जरूरत है पैसे की, जहां पे एज अ फाउंडर वी नीड मनी, राइट, जहां पे इन्वेस्टर्स हैव अपर हैंड, तो दे विल शेयर अ टर्म शीट. ठीक, टर्म शीट के अंदर क्या टर्म्स होते हैं, जनिशा विल स्टार्ट विद दैट मोस्टली टुमारो. ठीक है, just to give you basic, obviously Janisha is going to discuss all this. Term sheet lays down your terms of investment, कि what sort of rights investor will have. A financial investor भी आ रहा है, right? नेहा डोडिया is a financial investor, let's say, right? वो पैसा लगा दी कंपनी में, उसको इक्विटी शेयर्स मिल गया फॉर इंस्टेंस, ठीक है, क्या उसमें खुश हो जाएगी वो? शी बी कंफर्टेबल? नो. She would want to monitor utilization of her funds.
she would definitely want to see whether funds what she has given to Avi's company are being utilized properly for the purpose and not for his so-called luxurious life, right? जहाँ पे वो पैसा लेके वो मर्सिडीज घूम रहा है, जहाँ पे वो अपना घर बना रहा है, तब तो नेहा बोलेगी भाई मेरा पैसा लेके तो तू मजे कर रहा है, काम तो हो नहीं रहा है। ये तो कोई इन्वेस्टर नहीं चाहेगा ना। तो शी वुड वांट टू हैव मे बी लेट्स से नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ अवीज कंपनी और ऑब्जर्वर ऑन द बोर्ड ऑफ अवीज कंपनी, so that those directors or observers can see कि अभी क्या decisions ले रहा है, right? They can communicate to नेहा कि भाई ये decision लिए गए हैं अभी की कंपनी में। Lakshara, can you please mute? There is a background noise here. Sorry, I was actually disconnected. I'm just No leaving. issue, no issue. Just एक बार mute पे डाल ले please. हाँ. So that they can convey the message to Neha regarding whether the functioning of a company is being done properly or not. There is a purpose of having those nominee director and observer on the board. जब हम ये लोग rights देखते हैं ना agreements के अंदर कि ये nominee director right है investor का, ये observer right है, इसका purpose होता है। जब purpose समझोगे ना तो आप various stages of your transactional lawyer life you will be able to negotiate it well. You will be able to understand the importance of it and maybe convey it well to the opposite counterparty and tell them नहीं भाई इनको चाहिए ये right, ठीक है? इट्स नॉट, उसमें ब्यूटी क्या है? नेहा ने मान लो 5 करोड़ इन्वेस्ट किए, उसने बोला मेरे को तो भाई चाहिए राइट, क्योंकि मेरा 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तेरी कंपनी 6 करोड़ की है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो मेरा है, ठीक है? आई वॉन्ट दैट राइट, क्योंकि इसी पैसे से तुम कंपनी चला रहे हो, ठीक है? अब नेहा ने लेट्स से 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, क्या तब वो राइट मांग सकती है? तब अभी बोलेगा भाई रख लो अपने 5,000 रुपये, तुम्हारा नॉमिनी डायरेक्टर रखूंगा बोर्ड पे, हर बार हर चीज का अप्रूवल लूंगा तेरे से और फिर ये चीज बताऊंगा, तो नहीं चाहिए मेरे को, राइट? तो डोंट एज अ ट्रांजैक्शनल लॉयर गो बाय प्रेसिडेंट कि ये उस ट्रांजैक्शन में भी हमने राइट मांगा था तो हम इसमें भी मांगेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ ट्रांजैक्शन, राइट? Only if you become comfortable in understanding mechanics, then your suggestion becomes better, then your negotiation becomes better as a lawyer. And I'm starting with very basic. ये तो आज की discussion purpose भी नहीं है, just to make you start thinking now, so because tomorrow onwards you guys can actually start applying yourself when you are learning. Okay, so coming back to that example, टर्म शीट होता है, ठीक है? नेहा ने अपनी टर्म शीट भेजी, टर्म शीट के अंदर वेरियस चीजें कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वेदर इक्विटी शेयर्स, वेदर कन्वर्टेबल्स, वेदर व्हाटएवर व्हिचएवर फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होगा, ये भी पार्ट ऑफ फर्दर डिस्कशन है व्हिच वी विल हैव, राइट? वी आर नॉट डाइविंग इनटू इट राइट नाउ, ठीक है? कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट करेंगे, कौन कौन से राइट्स लेंगे, नॉमिनी डायरेक्टर राइट लेंगे, लेट्स से ABCDEFGH चीजें अभी कैन नॉट डू विदाउट कंसेंट फ्रॉम नेहा, राइट? वो लिखेंगे, टैग अलोंग राइट रखेंगे, ड्रैग अलोंग राइट रखेंगे, एंटी डाइल्यूशन प्रोविजन रखेंगे। ये सारी चीजें ना जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ अभी आपके जस्ट जनरल के लिए, इसके अंदर घुसना मत, ये सब चीजें हम लोग एक एक करके घुसेंगे, राइट? एक्सक्लूसिविटी क्लॉज रखेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज रखेंगे, राइट? Exclusivity and confidentiality clause are the only two clauses in a term sheet which are binding. Rest all of the term sheet is a non-binding term sheet. मतलब आपने टर्म शीट भेजी नेहा ने, अभी ने बोला हाँ एग्रीड, बोथ ऑफ देम साइंड, ठीक है? बट टर्म शीट इज सब्जेक्ट टू नेहा starting with her investigation of Avi's company. Okay, Avi cannot force Neha to pay money कि अभी अब इन्वेस्ट करो, तुमने टर्म शीट साइन की थी। नेहा बोलेगी भाई चिल, मैंने सिर्फ टर्म शीट भेजी थी टू रिकॉर्ड अवर डिस्कशंस, ये डिस्कशंस हैं हमारे, ये इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट है, बट ये एग्रीमेंट नहीं है, ये चीज रिजल्ट करेगी एग्रीमेंट में, ये चीज हम लोग एग्रीमेंट में डालेंगे, वो एक डेफिनेटिव डॉक्यूमेंट में डालेंगे, बाइंडिंग डॉक्यूमेंट में डालेंगे। तो ये सारी चीजें तब होंगी एग्रीमेंट के फॉर्म में जब मैं कुछ चीजें कंपनी के बारे में पता कर लूं, मैं अपने लॉयर अपॉइंट करूंगी, राइट? मैं अपने फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस गाइज अपॉइंट करूंगी। तो लीगल लॉयर में उसने अपॉइंट किया शुभ ओझा को, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस उसने अपॉइंट किया KPMG को, CA फर्म को अपॉइंट किया, राइट? वो लोग जब डिलिजेंस करेंगे अभी की कंपनी पे, वो फिगर आउट करेंगे कंपनी के अंदर कोई इश्यू है कि नहीं है, ठीक है? उसी को हम बोलते हैं
ड्यू डिलिजेंस। अगर मान ले बहुत मेजर इशू है, अभी की लिटिगेशन है कंपनी में इन्वॉल्व, दैट्स अ रेड फ्लैग। शुभ ओझा सबसे पहली चीज नेहा को हाईलाइट करेगा, नेहा you are considering investing 5 crores in Avi's company, please hold, please not please hold, please understand that there is a very big red flag. Avi की company के already there is a litigation जिसमें someone is claiming 10 crores from him. Okay, there is a high possibility that if it doesn't come in his favor, the order doesn't come in his favor, company has to pay 10 CR to someone. Would Neha invest then? नेहा बोली भाई 5 करोड़ मैं दे रही हूँ, मेरा 5 करोड़ लिटिगेशन है, साला उसको 10 करोड़ देना है, तो बिजनेस में क्या लगाएगा पैसा? नहीं करेगा इन्वेस्टर इन्वेस्ट। आई एम गिविंग अगेन पर्सपेक्टिव, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं ऐसा होता है कि इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा लिटिगेशन होता है, छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं। छोटे लिटिगेशन होंगे अभी के, अभी भी हो सकता हो कि कोई नॉन कंप्लायंस होगा अंडर कंपनीज एक्ट, उसका 500 रुपए या 5,000 पेनल्टी होगा या 5 लाख पेनल्टी होगा। तो जो इश्यूज होते हैं ना, जो इश्यूज हाईलाइट करते हैं, right, these issues sort of result in Neha deciding whether she should go ahead and invest in a company or not. And even if she's investing, let's say, even after knowing issues, let's say issue is not that major, what I said, like 10 crore litigation, let's say issue is in form of non-compliances under Companies Act, right? She will tell Avi to please ensure that कि ये सारे non-compliances का आपने कंपाउंडिंग कर दिया और आपने फाइन दे दिया कंपनीज एक्ट MCA को, ओके, डिपार्टमेंट को आपने इसको रेगुलराइज कर दिया है, सारे ऑफेंसेस को आपने कंपनी के अंदर, ठीक है। लेट्स से इशू इज इन टर्म्स ऑफ नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर अप्रूवल, लाइसेंस नहीं है आपके पास, कोई पर्टिकुलर आपका एप्लीकेशन स्टेज पे है, ठीक है। तो नेहा पहले 5 करोड़ इन्वेस्ट कर रही थी, 5 करोड़ इन्वेस्ट कर रही थी, 1000 शेयर ले रही थी, ठीक है। अगेन बेसिक एग्जाम्पल है, ये सब चीजें मैथमेटिकली बहुत अलग तरीके से वर्क करती हैं एग्रीमेंट्स में। अब बोलेगी भाई अभी मैंने देखा तेरी कंपनी में, जब मैंने टर्म शीट बोला था तेरे को, तो मैंने कहा था 5 करोड़ और मैं 1000 शेयर लूंगी, 5 करोड़ इन्वेस्ट करूंगी। इश्यूज के बाद मेरे को लग रहा है 1000 नहीं है, मेरे को 1500 शेयर चाहिए। अभी बोलेगा हाँ यार इशू 10 तो है, अब तुम्हें 5,000 में बात, 1000 में बात हुई, तो 1500 लेना, ले लो 1500 शेयर, ठीक है। समझ रहे हो, आपका प्राइस एडजस्टमेंट्स भी होते हैं। सो नॉट ऑलवेज शी विल किल द डील बिकॉज ऑफ द इश्यूज इन्वेस्टर वुड हैव सीन इन द कंपनी। नो, दे विल ट्राई एंड वर्क ऑन द प्राइस मैकेनिक्स, देन दे विल से कि प्राइस नाउ नेहा विल गेट अ बेटर प्राइस, राइट। फॉर इंस्टेंस यू गो एंड परचेज अ कार यार, ठीक है। अब आप कोई कार खरीदना, सेकंड हैंड कार ले रहे हो, आपको स्पिनी पे प्राइस दिख रहा है 15 लाख रुपए उस कार का, बट आपने जब कार चला के देखी, आपने बोला ब्रेक में इशू है, इसमें इशू है, इसमें मैं लेने को तो रेडी हूं, मैं कार जनरली अच्छी लग रही है, बट 15 नहीं दूंगा, मैं 10 लाख रुपए दूंगा। दैट इज अ वेरी बेसिक नेगोशिएशन, राइट, इन एनी थिंग विच वी डू इन लाइफ। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वर्क्स इन इन्वेस्टर वर्ल्ड, okay? So when Shubh Ojha will give her issues in the company, when financial advisors will give issues in the company, that is after the extensive due diligence. Neha will work on all this, right? Then we move to the definitive documentation stage. Definitive documents are all those agreements which we speak about: shareholder agreement, share purchase agreement, या share subscription agreement. और हर एग्रीमेंट की अपनी अलग पर्पस है, नीड है, ब्यूटी है, जहां पे all these things which we have agreed, discussed under the term sheet, or generally maybe post diligence, will get recorded, will become definitive binding commitment of the parties. Term sheet was a non-binding commitment, right? Agreements are binding commitment about the parties, but the way agreements are also designed, okay, does not inculcate into Neha's investment in Avi's company. So if, for instance, I'll give you instance, कि share, let's say share subscription agreement है, ये share purchase नहीं, subscription, जहां पे अभी की कंपनी नए शेयर्स क्रिएट करके इश्यू कर रही है नेहा को, नेहा सब्सक्राइब कर रही है। दैट इज व्हाट शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट इज। शेयर परचेज क्या होता, जहां अभी अपने शेयर्स नेहा को बेच देता एज अ प्रोमोटर, एज अ फाउंडर, कि तू ऐसा करने है, मेरे शेयर्स ले ले, राइट? वो शेयर परचेज होता है, परचेज इज परचेजिंग फ्रॉम समवन, सब्सक्रिप्शन इज सब्सक्राइबिंग इन द कंपनी, जिसमें कंपनी के अकाउंट में नेहा पैसा डाल रही है, कंपनी इज गेटिंग फंड्स। तो हमारे एग्जांपल में क्या लगेगा, हमारे केस स्टडी में क्या लगेगा जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जहां कंपनी को पैसा दे रही है ना, अभी नीड फंड्स फॉर द कंपनी, नॉट फॉर हिज पर्सनल यूज, राइट? राइट, हमारे स्टेज में शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट लगेगा, ठीक है।
उस एग्रीमेंट में आपके 3 स्टेजेस होते हैं, अदर देन एवरीथिंग एल्स 3 स्टेजेस होते हैं: कंडीशंस प्रेसिडेंट, क्लोजिंग डेट, कंडीशंस सब्सिक्वेंट। जो एग्रीमेंट आप साइन करते हो, ओके, जो ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके एग्रीमेंट पे नेगोशिएट करके आप जब एग्रीमेंट साइन करते हो, राइट, does not mean Neha putting money into Avi's company account that day and company issuing shares to Neha that day. No, it doesn't mean that. Signing of that agreement records the binding commitment of all parties, and then उसके अंदर जो जो चीजें covered हैं, like CPs, conditions precedent, have to be complied with, have to be fulfilled, primarily by the company, primarily by Avi. Conditions precedent क्या होते हैं? कंडीशन प्रेसिडेंट होते हैं क्लोजिंग के कंडीशन प्रेसिडेंट। क्लोजिंग मतलब नेहा जब मनी कंपनी के अकाउंट में डाल रही है और अभी की कंपनी नेहा को शेयर इशू कर रही है, दैट इज क्लोजिंग, दैट इज क्लोजिंग डेट। तो लेट्स से 13 जैन को हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, 13 जैन इज नॉट क्लोजिंग डेट, 13 जैन इज द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द टर्म्स। अब जब तक अभी जो कंडीशन प्रेसिडेंट की बात की थी हम लोगों ने, जब तक वो फुलफिल नहीं करेगा, कंप्लीट नहीं करेगा, और नेहा अभी को वो कंडीशन प्रेसिडेंट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं इशू करेगी, कि नहीं अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करेगा नेहा को और नेहा एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब तक वो क्लोजिंग डेट आएगा ही नहीं, राइट। कंडीशन प्रेसिडेंट क्या हो सकते हैं? लेट्स से अभी की कंपनी एक रेगुलेटेड एंटिटी है, उसको आरबीआई से अप्रूवल चाहिए, जब तक वो अप्रूवल लेके नहीं आ पाएगा, राइट, उसको ABCD चीजें चेंज करनी है, उसको वो कंपाउंडिंग जो करना था MCA के नॉन कंप्लायंसेस का, वो भी कंडीशन प्रेसिडेंट है, राइट। उसको लेट से सर्टेन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स अमेंड करने थे, वो भी कंडीशन प्रेसिडेंट है। लेट से नेहा को अभी की कंपनी में 2 लोग पसंद नहीं आए, बोले कि नहीं मेरे को दोनों लोग का चेहरा पसंद नहीं है, हटाओ इनको, उनको हटाना, वो भी कंडीशन प्रेसिडेंट है। जब तक वो सारे ABCDEFGH इवेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे और ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट नेहा को इशू नहीं करेगा और नेहा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब तक क्लोजिंग डेट नहीं आएगी, राइट। तो क्लोजिंग डेट इज द डेट विच इज the date of transfer of money from Neha to Avi and Avi issuing shares to Neha. Avi company actually issuing shares to Neha, right? And then you have condition subsequent. कि अब पैसा आ गया, like condition subsequent again is something which is required to be complied with by the company. मतलब कि नेहा ने let's say had asked for a nominee director, right? nominee director होना चाहिए, right? तो वो nominee director अपॉइंट हुआ कंपनी की बोर्ड पे, वो कंडीशन सब्सिक्वेंट हो गया कि Avi has to do all those filings, form filings, board meeting, shareholder meeting to get her nominee director appointed on the board, right? To maybe have, let's say, shareholder बन के आई है नेहा, right? तो let's say update register of members so that Neha's name is recorded in the register of members, right? So these are conditions subsequent. ठीक? This is how basic mechanics of any transaction would work, right? As a lawyer, we are involved in discussion on term sheet, in drafting of, एक और एग्रीमेंट होता है टर्म शीट के टाइम ही हो जाता है, उसको कहते हैं NDA, नॉट निशित देसाई एसोसिएट्स, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ओके। या नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट क्या होता है कि भाई मैं अपनी कंपनी की इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, अभी बोलेगा नेहा लिसन, मैं इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा ड्यू डिलिजेंस के लिए, आपको तो सब कुछ पता चल जाएगा मेरी कंपनी के अंदर क्या क्या है, मेरे कमर्शियल्स क्या हैं विद क्लाइंट्स, मेरे मेरे कंपनी के अंदर क्या इश्यूज हैं। आप तो कल मेरे को लात मार के निकल जाओगे और आप जाके सब डिस्क्लोज कर दोगे मेरे कॉम्पिटिटर वंश धोखा को, जो मेरे को धोखा दे देगा, राइट। तो इसीलिए वी हैव एन NDA कि भाई नेहा आप जो भी है आप डिस्क्लोज मत करना किसी को, नॉन डिस्क्लोजर, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, राइट, इज ऑल्सो समथिंग विच इज सेपरेटली एंटर्ड इनटू। तो वो एग्रीमेंट, टर्म शीट, ड्यू डिलिजेंस, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट, या अगर परचेज का है तो शेयर परचेज एग्रीमेंट, ऑल ऑफ इट इज समथिंग विच इज डन बाय अस लॉयर्स, okay, and discussion on each and every of those things is something we are going to do this in workshop. When say discussion, please remember guys, obviously शुभ हो जाए तो मेरा मतलब वो हो गया है, लेजेंडरी स्टूडेंट हो चुका है, इतना पुराना है वो। बाकी जो वर्कशॉप के हैं और जो नए बच्चे आए हैं लाइक संदली, प्रतीक एंड
अक्षरा, राइट? बाकी प्लेटफॉर्म्स में आपको ये सारी चीज शायद बताएं, बाकी क्लासेस में बताएं, बाकी लोगों समझ में आया, हम लोग इन सब चीजों को बहुत अलग लेवल पे डिस्कस करेंगे। जनिशा भी आपको अंडरस्टैंडिंग देगी बहुत डिफरेंट लेवल पे, मतलब टू गिव यू पर्सपेक्टिव अबाउट क्लॉजेज एंड एवरीथिंग, राइट? आई विल मेक यू नेगोशिएट विद ईच अदर, सो प्लीज लर्न लाइक एन एसोसिएट। आई विल पुट ऋषिकेश opposite Vansh, with Rishikesh as company counsel, Vansh as merchant investor counsel, right? And we both of you will be discussing on clauses. So be very, learn from that perspective. That's the basic idea from tomorrow onwards. Yes, Pratik. Sir, I didn't get one thing, that why we are signing these share subscription agreement and not the share purchase agreement in this case. How in this case we are SSA signed. तो देखिए स्टार्टअप की बात की हम लोगों ने, राइट? हम लोग Yeah. अभी क्या बोल रहे हैं, अभी की रिक्वायरमेंट है फॉर बिजनेस पर्पसेस, बिजनेस ग्रोथ पर्पसेस, कंपनी को फंड्स चाहिए, राइट? अब कंपनी Right, को right. फंड्स चाहिए हैं तो कंपनी इशू करेगी ना शेयर्स, कंपनी क्रिएट करेगी शेयर्स, इशू करेगी इन्वेस्टर को। इशू मतलब ऑफर करेगी शेयर अपने कंपनी के, राइट? तभी तो Right. नेहा कंपनी के अंदर पैसा डाल पाएगी, तभी तो कंपनी के पास फंड्स आएंगे टू डू इट्स बिजनेस, राइट? परचेज में क्या होता Okay. कि कंपनी ऑलरेडी थोड़ी बड़ी हो चुकी है, जहां पे अभी को लगता है कि मैं अपना थोड़ा स्टेक बेचता हूं क्योंकि मैं भी तो पैसा कमाऊं भाई, मैं एज अ फाउंडर। तो जहां अभी अपना स्टेक बेचता है और अभी के अकाउंट में पैसा आता, वो उसका पर्सनल होता पैसा, वो कंपनी का पैसा नहीं होता। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, समझ रहे हो? So राइट? SPAs are mostly signed between individuals and SSA is signed. इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स, पर्संस। कॉर्पोरेट भी तो Okay. करता है। Yeah, corporate. Yeah. हाँ, यहाँ पे कॉर्पोरेट इशू कर रहा है शेयर्स, क्रिएट कर रहा है और इशू कर रहा है शेयर्स, तो सब्सक्रिप्शन हो रहा है कंपनी के अंदर, राइट? नए शेयर्स बन रहे हैं, इशू एंड क्रिएट कर रहा है, इशू कर रहा है मतलब कि कंपनी नए शेयर्स बनाकर किसी को ऑफर कर रहा है कि आप ये लो मेरे कंपनी के शेयर्स। तो अभी की शेयर होल्डिंग जो थी कंपनी में, वो अभी की शेयर होल्डिंग उतनी ही है, परसेंटेज कम हो जाएगा, बट शेयर होल्डिंग 1000 शेयर थे अभी के पास, वो 1000 ही शेयर रहेंगे। कंपनी ने नए शेयर क्रिएट किए और नेहा को इशू किए, ठीक है? अभी अपने शेयर बेचता नेहा को तो परचेज होता, राइट? लेट्स से इंस्टेड ऑफ अभी, उस कंपनी के अंदर एक कॉर्पोरेट की होल्डिंग है, अभी लिमिटेड इज होल्डिंग शेयर्स इन XYZ लिमिटेड। अभी लिमिटेड अपने शेयर्स नेहा को बेचता, अगेन शेयर परचेज होता, क्योंकि अगेन यहाँ पे XYZ लिमिटेड ने इशू नहीं किए हैं शेयर, XYZ ने क्रिएट नहीं किए हैं। अभी लिमिटेड ने जो उनकी होल्डिंग थी कंपनी के अंदर, वो अपनी होल्डिंग बेची है, इसलिए परचेज बिटवीन टू एंटिटीज। मैं और आप अपने आपस में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको अपने शेयर्स बेच रहा हूं। और सब्सक्रिप्शन इज creation and issuance of new shares by the company which is in need of funds. Clear? Yes, sir. Okay. Thanks, sir. Yes, Abhi. So you had mentioned how in the term sheet there are only two clauses that are binding. Yeah. One was confidentiality. Could you tell what was the other? Exclusivity Okay. clause is something, guys, कि भाई अभी बोलेगा नेहा, मैं आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, राइट? और नेहा भी बोलेगी अभी को, दोनों ही लोग बोलेंगे दूसरे को ये चीज। तो जब तक हम लोग नेगोशिएशन स्टेज पे हैं, एटलीस्ट टर्म शीट नेगोशिएशन स्टेज, ड्यू डिलिजेंस, एटलीस्ट फॉर 3 months, प्लीज आप मेरी कोई भी कंपीटिंग कंपनी, जो वंश धोखा की कंपनी फॉर इंस्टेंस, ये दूसरी कंपनी में कंसिडर मत करिएगा इन्वेस्टमेंट। नेहा भी बोलेगी अभी, अगर मान लो बोथ आर ऑन सेम ग्राउंड्स, बोथ आर ऑन सेम पैरेलल स्टेज, मतलब नेहा को भी उतना ही इन्वेस्ट करने का मन है जितना अभी को पैसा चाहिए, लेट्स से, तो नेहा भी बोलेगी अभी को कि अभी टिल द टाइम आई एम कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी, प्लीज डोंट गो टू एनी अदर इन्वेस्टर, डोंट गो टू तमन्ना फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके? Exclusivity is कि both of you bind yourself each other for certain period, for 1 month, 2 months, 3 months under the term sheet, saying कि since we are thinking of doing a deal together, let's not approach anyone else during that period, right? That is what exclusivity is. Anyways, ये सब तो डिस्कस होगा अभी, ये सब टर्म शीट में तो अभी पूरा प्रॉपर टर्म शीट दिखाऊंगा कैसे होती है यार, शेयर भी करूंगा आप लोग के साथ, डोंट वरी। वो तो अभी तो बहुत अच्छी जर्नी बाकी है, ये तो आपको पिक्चर बता रहा हूं मैं, पिक्चराइज अच्छे से कर पाए आप लोग। आई एम श्योर संदली बहुत आप लेट ज्वाइन किए, अक्षरा भी बीच में ड्रॉप हो गए थे, तो यू मे नॉट हैव कनेक्टेड वेल, बट डोंट वरी, आई विल शेयर रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन व्हिच आई हैड प्रॉमिस्ड
to other students also who are not there because of their internship. But recordings are generally not available. Sandali, Akshara and Pratik. बाकियों से पूछ लो यहाँ पे, शुभ ओझा से पूछ लो बेचारे से, वो तो एकदम कितनी बार मैसेज किया होगा लाइफ में सर रिकॉर्डिंग, जान के भी कि सर रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करते. ओनली पर्पस ऑफ नॉट शेयरिंग रिकॉर्डिंग. नेहा ने फॉर इंस्टेंस, नेहा भी बेचारी झेली हुई है ये, कितनी बार मांगी है. रिकॉर्डिंग पर पर्पस सिर्फ इसलिए है कि अगर एक्सट्रीम सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो, देन otherwise if you have missed a session, reach out to your team members. Team members should take that responsibility and explain and teach you. Promotes two things. One, that your dedication to attend session, live session, interactive session. Second, always remember, always, irrespective kuch karo ya na karo, best learning is learn and teach. If you learn and teach, the maximum who will learn is you as a person. अगर कल प्रतीक आप मुझे से समझ के किसी भी अपने कजिन को जो लॉ भी नहीं करा उसको भी समझाओगे, या किसी भी और कि ये ऐसे ऐसे होते हैं स्टार्टअप्स, ये शार्क टैंक ना बकवास है, तेरे को सबसे ज्यादा समझ में आएगा. राइट? ऑलवेज लर्न एंड टीच गाइस. So that's why I don't share recordings. So I want you guys only to manage it all yourself. And then obviously I am there to help you again with the questions and whatever doubts you have, right? Anyways, so this recording will be shared. So don't worry for whatever you missed. And I'll put it to the, just, it will take me a couple of days, right? Because I'm too tied up with work, and putting it on that YouTube and sharing that link is a hell of a task. Okay, it's a very bad sort of, it's not an easy, I don't know if you guys can suggest an easy way of sharing it, but if any one of you know the better ways, but that sharing takes time. So give me a couple of days, but ये share हो जाएगा. Anyways, कल से जो discussion start होंगे ना, जो जनिशा लेगी primarily, कल के session में मैं नहीं रहूंगा, but definitely from next week जो teacher session सब में तो मैं रहूंगा, सब में रहूंगा, सिर्फ कल वाले में नहीं रहूंगा. We'll anyways start with all this understanding which we started with today, right? So don't worry, don't stress. Okay, all good guys, all good. Sandali, कैसा लगा आपको सेशन में आके? Yes, sir. So I felt nice for the timing I was there. Sorry I joined late. Yeah, no issues. कोई नहीं. Pratik, all good? Yes, sir. So it was really great session. So I got to learn a lot of things, and especially for introduction, it was good. Like, yeah, introduction ऐसे ही होता है, introduction के आगे भी ऐसे ही रहेगा. yeah. चलो, thank you guys. Yeah, see you tomorrow then. So not me, but you guys be there tomorrow at 5 p.m. Tomorrow 5 p.m. in the evening, right? Chalo, okay, bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Guys, Thank you, bye. sir.